बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर इंग्लिश की न्यू बुक से पोएम नंबर 7 सुर खहोड़ी के क्वेश्चन आंसर्स को, जो कि लिखा है शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने और इसे ट्रांसलेट किया था प्रोफेसर अमीना खमीसानी ने। ये वीडियो आपके लिए इस तरह से यूजफुल और हेल्पफुल होगी कि इसके अंदर हमने डिफिकल्ट वर्ड्स की उर्दू में मीनिंग लिख दी है, जिसकी वजह से आपको समझना और तैयारी करना आसान हो जाएगा। So let's start the video. These are the questions that we have to answer in this video. पहला क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है, लेकिन उससे पहले अगर आप ये चाहते हैं कि पोएम्स के तमाम तरह एमसीक्यूज, जितने भी पोएम्स हैं 7 पोएम्स, उन सब के एमसीक्यूज आप देख सकें और प्रैक्टिस कर सकें, तो आपकी स्क्रीन के टॉप राइट पे उसका लिंक मौजूद है। क्लिक करके तमाम पोएम्स के एमसीक्यूज देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, How is Khahori's character depicted by the poet? तो ये हो जाएगा the traditional compilations of Shah जो रिसालो include 30 Surs chapters which were compiled by renowned researchers. One of them is Sur Khahori. In Sindhi, Khahori means a monk or hermit. According to Bhittai, a Khahori is the devoted, pious monk and the one who is only in the search of truth and in the search of divine guide without caring about his own well-being. He is always in the search of spirituality and isolates himself from the society and tries to make connections with God. इसमें जो वर्ड है hermit, उसकी लिखी हुई उर्दू तारिकुद दुनिया गोशा नशीन, इसका मतलब यह है कि एक ऐसा शख्स जो दुनिया को छोड़कर खुदा की तलाश में निकल जाए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डू द कहोरीज एक्सपीरियंस स्लीप? तो इसका जवाब है, कहोरीज इज एस्थेटिक एंड टेक्स लिटिल स्लीप. During his sleep, a Khahori finds those people who had seen his beloved truth. For experiencing the truth and gaining spirituality, a Khahori thinks to stay a night with those who have found the truth and God. Spending nights in the company of truth seeker and then sleeping may lead him to his destination. Night-long meditations and seeking the truth may lead him to God. Question number 3 है, where and why do Khahoris spend their days and nights? तो इसका जवाब है, the Khahoris are always restless for seeking the truth and the way to God. They neither sleep deep nor do they rest during day. In order to find out the truth, they spend night with the people who have found God. They start their journey early in the morning and leave for far off places. They keep wandering in the mountains, deserts, and forests without caring their well-being. अगर आप ये चाहते हैं तमाम तर प्रोज के जो यूनिट्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, उसके एमसीक्यूज सुन सकें, प्रैक्टिस कर सकें, तो आपकी स्क्रीन की टॉप राइट पर उसका लिंक शो हो रहा है, वो क्लिक करके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज द पोएट वांट टू से व्हेन ही सेज वेयर नॉट अ ट्रेस ऑफ बर्ड्स इज सीन फायर इज लेट? तो इसका जवाब है, द कहोरीज आर एस्थेटिक्स एंड दे ट्रेवल far off places in the search of truth and spirituality. They are such dedicated people that they can go even to the place where not even birds go. In such remote and deserted place, they seek the truth and lit the fire of the truth. They are the torch bearers in a place where there is darkness of ignorance everywhere. क्वेश्चन नंबर 5 है, what reward does a Khahori get after his hard work? तो इसका जवाब है, the Khahoris who give up the pleasures of the world, ignore their physical well-being for the sake of spiritual prosperity, and devote themselves in the search of the truth, save themselves from ignorance and find God. Their encounter with spirituality and God causes their illumination of the truth, which is their reward. अगर आप ये चाहते हैं कि प्ले के तमाम तरह एमसीक्यूज जो कि ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं,
उन तमाम तरह एमसीक्यूज को सुन सकें और उसकी प्रैक्टिस कर सकें, तो स्क्रीन के टॉप राइट पे उसका लिंक शो हो रहा है, वो क्लिक करके आप देख सकते हैं। Sur Khahori is the narration of Khahori's struggle, elaborate. The traditional compilations of Shah Jo Risalo include 30 Surs chapters. One of them is Sur Khahori. It is the narration of a struggle because a Khahori is a devoted and pious ascetic who is in the search of the truth, only in the search of divine guide, and in the search of divine guide, without caring about himself, his own well-being. He is always in search of his spirituality and isolates himself from the society and tries to make connections with God. All these take a lot of struggles, sufferings, and sacrifices. अगर आप ये चाहते हैं कि प्ले के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जैसे अभी आप पोएम के देख रहे हैं वो भी आप डिफिकल्ट मीनिंग्स के साथ देख सकें ताकि आप अपनी तैयारी कर सकें, तो आपकी स्क्रीन के टॉप राइट पे उसका लिंक शो हो रहा है, वो आप क्लिक करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, which poetic devices have been used in this poetry? Write with the examples. तो इसके अंदर 3 जो है हमारे पास यूज हुई पोएटिक डिवाइसेस, एपोस्ट्रोफी है, मेटाफर है और हाइपरबोले। तो इसमें एपोस्ट्रोफी को पहले डिफाइन किया है, लिखा हुआ है इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ स्पीकर डायरेक्टली एड्रेसेस समवन और समथिंग दैट इज नॉट प्रेजेंट और कैन नॉट रिस्पॉन्ड इन रियलिटी। एग्जाम्पल इज मदर, आई सॉ दोज हु हैव बिलवड सीन। मेटाफर क्या है? ये वो फिगर ऑफ स्पीच है, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स अ कंपैरिजन बिटवीन टू नोन सिमिलर थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है राफ्ट इन द ओशन इन द वर्ल्ड। उसके बाद फिर हाइपरबोले है, लिखा हुआ है इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच फॉर एक्स्ट्रावेगेंट एग्जैजुरेशन टू एम्फसाइज द मीनिंग्स, फुल स्टॉप। और एग्जांपल है रिड्यूस टू द बोन्स दे आर, यानी कि आप बहुत मुबालगा आराई करते हैं, बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इन मॉन्क्स के बारे में, इन एस्थेटिक्स के बारे में कि वो दे आर रिड्यूस टू द बोन्स, जो कि ऑब्वियसली बात है प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, मर जाएगा इंसान। क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट क्वेश्चन हमारी वीडियो का, इसमें कह रहे हैं कि व्हाट इज सुर खहोरी, एक्सप्लेन। तो इसका जवाब है सुर खहोरी इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल कॉम्पिलेशंस ऑफ शाह जो रिसालो which is the collection of Shah Latif's poetry. Shah Abdul Latif Bhittai was a Sindhi Sufi mystic and poet widely considered to be the greatest poet of Sindhi language. Shah Jo Risalo includes 30 surs. One of them is Sur Khahori. In Sindhi, Khahori means a monk or a hermit. It was translated into English by Professor Amina Khamisani, who was an educationist and author. इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और शेयर भी करें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन हमें एनर्जी देती है कि हम आपके लिए फर्दर काम कर सकें जो कि आपके लिए यूजफुल हो। तो सब्सक्रिप्शन इज मैंडेटरी एंड शेयरिंग द वीडियो विद योर क्लास फेलोज इज आल्सो मैंडेटरी। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।